Okay. See, see my broccoli. हाय एवरीवन, मैं हूँ शेफ अकरम। जैसे कि आज जो वीडियो टॉपिक है वो है ब्रोकली विद गार्लिक। ब्रोकली विद गार्लिक कैसे बनते हैं, आज उसी पे वीडियो है। ब्रोकली विद गार्लिक तो बहुत चाइनीज डिश है, बहुत लाजवाब डिश है। आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आएगा। आप सीखने के लिए बहुत कुछ इससे मिलेंगे। ये बहुत लाजवाब डिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे आप हमें सपोर्ट करें, ऐसे ही हम रोज़ एक नई डिश के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। शाम को 5 बजे हमारे वीडियो अपलोड होते हैं। इसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं शेफ स्टीवन, जो अफ्रीकन शेफ है। आइए मिलते हैं शेफ स्टीवन से कि ब्रोकली विद गार्लिक कैसे बना के दिखाते हैं हमें, और उसे हमसे क्या सीख मिलते हैं। ऑलरेडी हम उसे बता चुके हैं, सिर्फ वीडियो में वो बना के दिखाएंगे आपको कि ब्रोकली गार्लिक कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं शेफ स्टीवन से। Good evening to our fans outside there. I'm Chef Steve, Chinese chef. Today I'm about to make broccoli with garlic. Broccoli with garlic sauce. You can hear this is my fresh broccoli, but I already parboiled it here. You can see this already parboiled. And this is my salt. This is my cucumber, sliced my own way. These onions, this yellow capsicum, and this yellow capsicum, and this green capsicum. This is my spring onions. This is my scallion, and this is my garlic. No, I love garlic. Garlic is very rich. And this is my white pepper. This is my sesame oil. Next time I will show you the bottle of my sesame oil. This is my Jinomoto stock. Then this is my oyster sauce. Oyster sauce. All right. We are about making the sauce. See, I put a little of my oil. Allow my pan to heat, to hot. Allow the oil to heat a little. Okay, we've watched it. Okay, I'm about putting my garlic. This is my garlic. I will toast it a little. Let's toast it a bit. Don't need to allow it to burn. Don't need to burn. And I'm putting my capsicum. Okay, putting my capsicum. And I put my chicken stock. Put some putting my salt. See your white pepper. Putting my sesame oil. Putting my oyster sauce. Putting my oyster sauce. Putting my Jinomoto. Allow it to cook a bit. Check your stock. Check your taste. Let's put my spring onions. My spring onions. Let's remember we are making sauce. Put my broccoli. Remember it's already boiled before, so you don't need to overcook.
next thing now. Put corn flour to make it thick. And see, now it's ready. Next time I'm giving you something different. Don't forget to share and like, subscribe, and I'll give you more. Thank you.